Yes, sir. We are now live on YouTube. You can go ahead, Atul ji. Yes. રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જીટી લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે તેમજ 3 ફેડરેશન મુંબઈ ફેડરેશન, ગુજરાત ફેડરેશન અને મરાઠી ફેડરેશનના ઉપક્રમે આયોજિત આજના ઈ પ્રવચન પસાયદાનના વક્તા શ્રી શિંદે સાહેબ, શ્રી નંદકુમાર રાઉતજી તેમજ અશોક લોખંડેજી અને આજની સભામાં હાજર સર્વે સભ્યોનું આજના ત્રિવેણીમાં સ્વાગત કરું છું. આજના કાર્યક્રમની શરૂઆત માટે હું તરલભાઈ મુનશીને આમંત્રણ આપું છું કે આજની કાર્યવાહી શરૂ કરે. તરલભાઈ. जी नमस्कार सभी को. सभी आमंत्रित लोगों का स्वागत है. आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 फेडरेशन मतलब मराठी, गुजरात और मुंबई फेडरेशन तीनों मिलकर, और 3 लॉज तो हैं ही जो पृष्ठभूमि में कार्य कर रही है. तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये सारे लोग मिलकर एक त्रिवेणी मीट पर आए हैं. बहुत बहुत धन्यवाद मैं चाहता हूँ तीनों फेडरेशंस को. उनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भी जुड़ेंगे, लेकिन गुजरात के जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जी हैं वो दोनों इस वक्त ट्रेवल कर रहे हैं, तो शायद नहीं जुड़ पाएंगे. लेकिन हम आगे बढ़ते हैं. और आज के प्रथम वक्ता जो है हमारे आदरणीय शिंदे जी हैं. तो प्रेयर. हाँ, उसके शिंदे जी के आगमन के पहले मैं अर्चना जी से दरखास्त करूंगा कि वे प्रेयर से शुरुआत करें. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden light, Embracing blessing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you so much अर्चना जी. और मैं अब चाहूंगा कि मैं इस सभा की शुरुआत करूं, क्योंकि आज का विषय बहुत ही रोचक है. शिंदे जी के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, लेकिन परिचय देना एक परंपरा है. वे जूलॉजी के प्रोफेसर हैं और सांगली पुणे से उन्होंने रिटायर हुए एज अ प्रोफेसर. 37 ईयर्स 37 वर्षों तक वो प्रोफेसर रहे. उन्होंने 10 किताबें जूलॉजी पर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए लिखी हैं. वे लाइफ मेंबर हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के और टीएस सर्विस में 1975 से संलग्न है. उन्होंने कई कंडक्ट किए हैं सेमिनार, स्कूल ऑफ विजडम, वर्कर्स ट्रेनिंग कैंप, स्टडी क्लासेस अलग अलग जगह पर पूरे भारतवर्ष में आयोजित की है. नेशनल लेक्चरर तो वो इंडियन सेक्शन के हैं ही. कई आर्टिकल इनके पब्लिश हुए हैं थियोसॉफिस में, वेकअप इंडिया नाम की मैगजीन में, थियोसॉफिकल डाइजेस्ट में, इंडियन थियोसॉफिस में और बहुत सारे फेडरेशन जर्नल्स में. उन्होंने बहुत सारी छोटी संक्षिप्त वार्ताएं अलग अलग जगह कही हुई हैं. इंटरनेशनल सिंपोजियम में उन्होंने पार्ट लिया हुआ है और कन्वेंशन के दौरान अड्यार में तो बहुत सक्रिय रहते ही. उन्होंने एक द वॉच टावर आर्टिकल्स ऑफ मिसेस राधा वर्नियर का कंपाइलेशन किया है, संकलन किया है, और जो पब्लिश हुई है एक किताब में जिसका टाइटल है द वर्ल्ड अराउंड अस. अभी वे रेसिडेंट हैं अड्यार के. वहाँ के वो लाइब्रेरियन हैं, किताबों से घिरे रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं. द अड्यार लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर के लाइब्रेरियन हैं, और साथ ही वे सचिव यानी सेक्रेटरी भी हैं ऑलकोट मेमोरियल हाई स्कूल, और पार्टिसिपेट करते हैं बहुत अलग अलग विभिन्न गतिविधियों में अड्यार में. और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि लगातार शिंदे जी त्रिवेणी को भी आशीर्वाद देते रहते हैं. वे जीसी मेंबर और एसी मेंबर भी हैं, और इंटरनेशनल स्पीकर की तरह उन्होंने श्रीलंका और कई विदेश जगहों पर उन्होंने अपने व्यक्तित्व दिए हैं. आइए आदरणीय शिंदे जी अपना व्यक्तित्व आरंभ कीजिए. Thank you, Taralji. Good evening to you all, brothers and sisters.
Today is really a special day, special Tuesday. It is said as a Rang Panchami day, festival of colors. And this 22nd March is also considered as the International Water Day, Day of Happiness, and all this. So I bring to you hearty greetings and good wishes from Spiritual Center of Adyar, and wish success to our sincere effort of bringing many federations together. This is a kind of synergy attempt. So collectively, we do more effective work. As united we stand and divided we fall, that maxim says. We can live better life individually, but collectively we contribute for the survival of the human species. So this is what the importance of synergy. I express my sincere thanks to Brother Taralji and also Archanaji and all the federation members for conducting such kind of inter-federation meetings or seminars. Also, I thanks to my national lecturer colleagues, Brother N. RAUT, Brother ASHOK LOKHANDE, all of us, myself, Brother N. RAUT and ASHOK LOKHANDE, we have worked together and served in the Marathi Federation and taken the responsibility of presidency of that federation. And when we bring federations together, that is really an opportunity for all of us to contribute our energy and make it as a synergy for the upliftment of humanity. I thanks and extend warm welcome to all participants observing this on online as well as on YouTube. And special thanks to Taralji for his kind words about me while introducing. So brothers and sisters, let me begin with Guru Namana. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Guruve Namaha. It is better to remember always to Guru, because it is said in Sanskrit, Dhyana Moolam Guru Murti, Puja Moolam Guru Pada, Mantra Moolam Guru Vakya, and Moksha Moolam Guru Kripa. So the root of meditation is the form of the Guru. Root of the worship is the feet of the Guru. And the root of the mantra is the word of the Guru. And the root of liberation, root in the sense, root cause of liberation, is the grace of Guru. So without grace of Guru, there is no mukti. That is what importance is given to the Guru and Guru Parampara. And what we are studying today about the JANAESVARI and PASAYDAAN, which is the universal, universal prayer. So let me tell in brief, before we go to that universal prayer PASAYDAAN, background of JANAESVARI and the brothers, that their father, Vitthal Pant, as we know, he took sannyas, but as per the command of his Guru, he came back to hold the household life.
So in that sense, a loyalty to the Guru, Vitthal Pant obeyed the orders of his Guru and came back to Alandi and became a householder after being sannyasi. So after some years, the couple got 4 children. As we know, the eldest one Nivrutti, second Jnanadev, third Sopan, and 4th daughter Mukta. So Nivrutti, Jnanadev, Sopan, Mukta Bai. So their birth took place especially in the last quarter of the century, right from 1268, 1271, 1274, and 1277. So these 4 brothers took birth. Why I am mentioning this? Every last quarter of the century has got some significance. And also the last decade also has got some significance. I am going to refer this. You know, in 1975, Theosophical Society was founded for universal brotherhood. And in 1995, J. Krishnamurti was born and gave new direction to the choiceless awareness. And as per this, in 1275, last quarter of this century, Jnaneswar was born and gave the awareness of importance of spirituality to all human conditions, human classes. So this is how their birth took place respectively in the year 1268, 1271, 1274, and 1277. Then, as we know the history at the proper ages of the sons, they should be initiated by the ritual of thread ceremony, munja we call. But during that period, no Brahmins were willing to conduct such kind of ceremony for these children. It is only because they said, Vitthal Pant, they said to the Vitthal Pant, you and your sons have no caste, family, class, and no eligibility for being initiated. You are sannyasi, and these are your sons. So sannyasi's sons are not eligible for being initiated or conducting such kind of thread ceremony. A sannyasi is not having any caste. So in our opinion, they said, these children have no right to be initiated by a thread ceremony. And actually, you should suffer for your action a punishment. And they gave a punishment. What is that punishment? Punishment of ending your life. That is the only punishment to wipe out such kind of sin, that is returning from sannyasi life to the household life. So Vitthal Pant and Rukmini, being obedient disciples, they obeyed the orders and understood the situation which has arisen after committing such kind of, according to the society, it was sin. And they took the punishment and committed the suicide. This is the history as we study. This is, of course, as a solution to Vitthal Pant's sin of coming back to the life of householder from status of sannyasi. See, sannyasi is so important. And once you have taken, you must be on that path. That is what the scriptures were saying that time.
Again, all the 4 children approached the Brahmins after their suicide, but no Brahmin was ready to perform the initiation ceremony. And they were directed, these children, to go to Paitan. I am going this background because everybody must know the history. And when they are asked to go to Paitan to obtain the purity certificate, which would be honored by the Brahmins from the Alandi, then only if you bring that purity certificate. And accordingly, the children felt very sorry. Nivrutti decided to go to Paitan with both his brothers and sister Mukta. So all the 4 walked or traveled by bullock cart from Alandi to Paitan and approached the religious authorities there, narrating their lamentable state, gave the letter which was given them by the Brahmins of Alandi. There was a lengthy discussion among the Brahmins of Paitan because they are actually very good scholars, and those Brahmins refer to various religious books, law books, scriptures, but unfortunately in none of which there was any mention of the particular sin of coming back to householder's life from sannyasa, nor mention of any retributory ordeal which may remove the stigma on the progeny of such a man. But one thing happened. All Brahmins in Paitan were much impressed by the words of the wisdom words of Nivrutti and Jnanadev. What they were speaking, it was really inspiring and impressive. So Brahmins asked Jnanadev, you yourself call as Jnanadev, and you are talking very impressively. And they asked the question, do you say that the God or Atman is the same in all beings? And if so, is your Atman the same as in this buffalo which is passing by? See, they asked such kind of critical question. As we say, oneness of life, Atma in me and Atma in others is the same. There is no distinction of life in me and life in others. The same question was asked, and Jnaneshwar said, yes, it is. Atma in me and Atma in buffalo is the same. Then they wanted to test it. They gave beating to the buffalo, and miracle happened. When they were beating the buffalo, it was seen by all that the mark of that hitting appeared on the back of Jnaneshwar. The people were surprised. Then again there were critics. A senior Pandit asked, do you think that even this buffalo can recite the Vedas as we Brahmins do? And Jnanadev said, yes. In other words, if it is yes, then in order to prove this, you can show it. Then he simply put his benedictory palm on the head of the buffalo, and suddenly the buffalo in his particular broad boss voice began to recite the Veda right from the beginning, even with its higher and lower ascents. And seeing this, the veterans of Paitan gave Nivruttinath a certificate of purity. This is, even if you go to the Alandi, there you can see the idol of this buffalo, which recited these Vedas. And
that is called Jnanoba. So there is that idol also of buffalo. So seeing this, what happened, Nivruttinath, a certificate of purity, he got it. But in that certificate, there was some hint. Those children are divine in origin, and we are not ourselves so capable as can give them a certificate. That is how it was stated in that certificate, that they are higher and divine souls. So we have no authority, rather, we have no capacity to certify them in this manner. So there is no necessity to, but they said there is no necessity to purify them because they are pure in their own authority. But this effect of this certificate was very doubtful because there were no straight directions that thread ceremony should be performed. In Brahmins, this ceremony is very important for to take step forward in the spirituality. The children, knowing that no further benefit can be expected from such orthodox Brahmins, so they came back to Nevase, and it was in Nevase, Lord Shankar, the Jnaneshwar, the temple, Jnaneshwar spoke on Bhagavad Gita, Gita commenting at length in a parameter of OV in beautiful Marathi language, so that the eternal message of the Lord Sri Krishna would be understood by ordinary people who were not knowing Sanskrit. This commentary was written down. Again, I am saying it is written down. Means it is not written by the Jnaneshwar. It is written down by one pious man by name Satchidananda Baba, which book is known by the name Sri Jnaneshwari. Whatever Jnaneshwari we have, I have with me 2 Jnaneshwaris in English. So these Jnaneshwari, they are now translated in English, but original it is original Marathi in a beautiful language. This commentary was written down by one pious, as I said, by Satchidananda Baba. And this is what Bhavartha Deepika. It is called Bhavartha Deepika or Jnaneshwari, Sri Jnaneshwari. So this commentary was so liked and loved by thousands of people that Nivrutti, Jnanadev, Sopan and Sister Mukta were really adored, respected, worshipped by all the divine incarnations in human forms. And this commentary gives the Lord's teaching in Marathi in a manner in which the sense and the inner meaning of the words of the Lord Sri Krishna are clearly expressed. This commentary was completed by Jnaneshwar when he was only 15 years. Again, I am giving you. So the birth took place in the last quarter, and this Jnaneshwari is written in the when he was only 15 years old. The same thing happened in the life of J. Krishnamurti. He also born in the last quarter, and at the feet of the master was written when he was 15 years old. I don't know how they link, but there is some numerological people who connect the J. Krishnamurti with the Jnaneshwar. So after completion of this commentary, he wrote another book by name Amruta Anubhav, which means in general, the experiencing of immortality or the realization of the nectar of eternal life.
Further, he has composed many devotional songs called Abhanga, containing abstract description of occult phenomenon of personal experience in the process of awakening of Kundalini. Dhaneshwar has written a short poem in Ovi meter addressed to Mahayogi Changadev, advising him about the non-duality, oneness of life, as a fact in the universe, and the unity of Atma in Jnanadev as well as Changadev. That poem is famous by name Changadev Pasashti, because there are in it 65 ovis, one of the gems of mystic poetries all over the world. And second famous one is Haripata of Jnanadeva, which contains about 28 abhangas, which is famous for its exact description of the state of mind of a true devotee and instructions about devotion. Why I am giving this? Because it is this, during last quarter of the century, Jnaneshwar gave this teaching of non-duality, teaching of oneness of life. And he gave teaching not only to the yogis, but also yogis like this Changadev, Gopis and all those. But he also gave knowledge to all this. So after this, in brief, we will go to the Pasaydaan, because universal prayer for divine grace, Pasaydaan. This is Pasaydaan is a prayer for divine grace written by philosopher Saint Dhaneshwar after completing his most famous work of Jnaneshvari. Is truly an universal prayer for the welfare as well as being of the entire mankind, as well as other living beings beyond any caste. So beyond any caste, creed, race, region, and boundaries of nation, it inspires us to think globally and act locally, lays the foundation of the universal brotherhood. The world will be seen as one global family, Vasudeva Kutumbakam. Possibly, Pasaydaan, the prayer for divine grace, could be the universal prayer, as it does not confine to any race, religion, or caste, like our universal prayer, O hidden life, O hidden light, O hidden love. And because that also all embracing all in one, realizing oneness of life is our mission of the TS, and that is what it happened. Now in the next period, we will see one by one these Pasaydaan ovis. There are only 9 ovis that we will take it in the next half. Thank you, Taralji. Unmute. सर अनम्यूट करें. वो वापस म्यूट हो गया. थैंक यू सर एंड शिंदे जी, बहुत बहुत धन्यवाद. अब पहली बार नंदकुमार राउत जी, अभी तक हम जो तीसरी लैंग्वेज होती है हर वक्त गुजराती होती है, लेकिन आज मराठी से शुरू कर रहे हैं. और कितनी बढ़िया बात है कि अगली बार जो लैंग्वेज होगी वो मलयालम होगी. तो नंदकुमार राउत जी का एक संक्षिप्त परिचय मैं जरूर देना चाहूँगा. वे बहुत सक्रिय हैं ही थियोसॉफी में और सभी में. आपने बी सिविल किया है. कहीं से खराश की आवाज आ रही है शायद. आपने बी सिविल इंजीनियरिंग में पुणे से किया है. 2015 में पंजाब राव देशमुख एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अकोला से आप रिटायर हुए हैं. और टीएस अकोला लॉज में 1 दिसंबर 1997 को मेंबरशिप ली है. आप अकोला लॉज के ट्रेजरर 2008 से 2016 तक रहे. वहीं 2016 के बाद 2019 तक अकोला लॉज के प्रेसिडेंट भी रहे. वे मराठी थियोसॉफिकल फेडरेशन के 2016 से 2019 तक प्रेसिडेंट भी रहे हैं. और 2019 से आप नेशनल लेक्चरर इंडियन सेक्शन वाराणसी भी हैं. तो आइए, और आपके पास 9 मिनट है.
मराठी में अपना व्यक्तित्व दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, सगळ्यांना नमस्कार। शिंदे साहेबांनी जी पूर्व पीठिका सांगितली ती अगदी म्हणजे पसायदान, ज्ञानेश्वरी, संत ज्ञानेश्वर यांच्याविषयीची जी माहिती आहे ती आपल्याला शाळेमध्ये बरेचदा सांगितली आहे, परंतु डिटेल माहिती काही आपल्याला पुष्कळ लोकांना माहिती नाही। त्यामुळे त्यांनी अगदी परफेक्ट पद्धतीने सांगितली। थँक्यू शिंदे सर। मी आता मराठीतून पसायदानाचं सुरुवात करतो। थोडीशी हिस्ट्री आणि नंतर 3 ओव्या आपण याच्यात बघू, त्याचा अर्थ बघू। श्री संत ज्ञानेश्वर व ज्ञानेश्वरी हा मराठी मनाच्या नित्य ध्यासाचा विषय आहे। संत ज्ञानेश्वरांचा जन्म आपेगाव येथे इसवी सन 1275 रोजी झाला। त्यांच्या वडिलांचे नाव विठ्ठलपंत कुलकर्णी व आईचे नाव रुक्मिणीबाई होते। निवृत्तीनाथ हे ज्ञानेश्वरांचे थोरले बंधू व सोपानदेव व मुक्ताबाई ही धाकटी भावंड। त्यांचे जन्मगाव आपेगाव हे औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण जवळ गोदावरी नदीच्या काठावर वसलेले छोटे गाव आहे। भावार्थ दीपिका उर्फ ज्ञानेश्वरी या भगवद्गीतेच्या ग्रंथाचे कार्य ज्ञानेश्वरांनी इसवी सन 1290 मध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रवरा नदीच्या काठी एक नेवासे नावाचं गाव आहे, त्या गावातील मंदिरात एका खांबाला टेकून पूर्ण केले। ज्ञानेश्वरीच्या माध्यमातून संस्कृत भाषेतील ज्ञान श्री संत ज्ञानेश्वरांनी प्राकृत भाषेत आणले। भगवद्गीतेच्या 700 श्लोकावर ज्ञानेश्वरांनी 9000 ओव्यांचे ज्ञानेश्वर रूपी भाष्य केले। ज्ञानेश्वरीच्या शेवटी 9 ओव्यामध्ये ज्ञानेश्वरांनी परमेश्वराजवळ जे मागणे मागितले त्यालाच ज्ञानेश्वरांचे पसायदान म्हणतात। पसायदान ही प्रार्थना आहे। पसाय हे प्रसाद या शब्दाचे रूप आहे। पसायदान हे व्यक्तिगत मानवी जीवन व सामाजिक जीवन अधिकाधिक सुखमय व आनंदमय होण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या तत्वांचा त्यात विचार केला गेला आहे। तो विचार संपूर्ण मानवतेसाठी व सर्व काळामध्ये सत्य आहे। आणि पसायदान हे 18व्या अध्यायाचा एक भागच आहे। आपण पहिल्या भागामध्ये 3 ओव्या 4 ओव्या बघू, त्यांचं विवेचन बघू। पहिली ओवी आहे, आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यने तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसायदान हे। याचा अर्थ असा की आपले गुरु निवृत्तीनाथ यांच्या आज्ञेनुसार गीतेतील 700 श्लोकांचे 9000 ओव्यांमध्ये निरूपण पूर्ण झाल्यावर म्हणजेच ज्ञानेश्वरी ग्रंथ पूर्ण झाल्यावर काय दोस्त नसून काय दोस्ती आहे कोणाची? काय नसते सगळीजण तसंच असत्या। माळी लोकांचं उदाहरण द्यायला माळी लोकांचं उदाहरण म्हणजे त्यांनी सुरुवातच केली आता विश्वात्मके देवे, म्हणजे आता म्हणजे ज्ञानेश्वर माऊलींनी आपली ज्ञानेश्वरी पूर्ण केल्यानंतरची ही मागणी आहे। आणि ही मागणी त्यांनी विश्व हाच ज्याचा आत्मा आहे त्या विश्वात्मक देवाकडे त्यांनी पसायदान मागितले। त्यांनी कुठल्याही देवाचं नाव नाही घेतले। विश्वात्मक देव ज्ञानेश्वरांना वेद वाङ्मयामधून गुरुकृपेतून व आत्मानुभवातून परमेश्वराचे जे ज्ञान झाले ते त्यांनी विश्वात्मके देवे म्हणून या पदातून व्यक्त केलेले आहे। गीतेतील अवघड संस्कृत श्लोकांचे सुबोध मराठीतून ओवी रूपाने त्यांनी भाष्य केले। तो एक प्रकारचा ज्ञानेश्वरांचा वाग्यज्ञच होय व ज्ञानयज्ञ सुद्धा आहे। वाग्यज्ञ याचा अर्थ वाणीच्या द्वारे केलेला यज्ञ। या यज्ञाने त्यांनी श्रोते गुरु निवृत्तीनाथ
व त्यांना अभिप्रेत असलेला विश्वात्मक देव या सर्वांना संतुष्ट केले आणि म्हणूनच ज्ञानेश्वर अत्यंत आत्मविश्वासाने त्या विश्वात्मक देवाजवळ पसायदान मागत आहे. एवढे मोठे ईश्वर कार्य केल्यानंतर आपल्या स्वतःसाठी मागायचा अधिकार प्राप्त झाला आहे त्यांना. अशा भावनेतून त्यांनी मज द्यावे पसायदान हे असे म्हटले आहे. म्हणजे मागण्याचा अधिकार श्री ज्ञानेश्वर महाराजांचा, त्यांचा एकट्याचा, पण त्यांनी जे काही मागितलं ते सर्वांसाठी मागितले. दुसरी ओवी आहे, जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांची. संत ज्ञानेश्वर आपली मागणी ही या ओवीपासून सुरुवात करतात. म्हणजे दुसऱ्या ओवीपासून सुरुवात करत आहेत. त्यांचे पहिले मागणे आहे याच्यामधलं की खळांची व्यंकटी सांडो, म्हणजे दुष्टांचा दुष्टपणा जावो. त्यांना प्रथम आठवण झाली की खळांची म्हणजे खल कपट, दुष्टांची, दुर्जनांची. जसे कोणत्याही आईला आपल्या दुर्गुणी मुलाचीच अधिक काळजी असते, तशीच ज्ञानेश्वर माऊलींना पण आहे. दुष्टाने दुष्टपणा सोडल्यास तो व इतरही सुखी होतील. एखादा माणूस स्वार्थ, गर्व किंवा मत्सरामुळे इतरांच्या जीवनात दुःख निर्माण करतो आणि अशी खल प्रवृत्ती व्यक्तींमध्ये व समाज पातळीवर अनेक स्वरूपात दिसते आहे. घराघरातील कलह, समाजातील भांडणे, हिंसा, राष्ट्रांमधील युद्धे, महायुद्धे ही या खल प्रवृत्तीची दृश्य रूपे आहेत. म्हणूनच खळांची व्यंकटी सांडो म्हणजे दुष्टांचा दुष्टपणा जावो. पुढे म्हणतात ते तया सत्कर्मी रती वाढो, म्हणजे केवळ दुष्टपणा संपून चालणार नाही, त्याची जागा सज्जनतेने, सत्कर्माने घेतली पाहिजे. दुष्टपणा गेल्यावर त्या सत्कर्मात प्रयत्नपूर्वक गुंतवणे आवश्यक आहे. सत्कर्माची त्याला गोडी लागली पाहिजे. एखादे काम मनापासून केले तर ते आनंददायी होते. म्हणून सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे. व्यक्तीला आणि समाजाला सुख स्वास्थ्य लाभण्यासाठी परस्परात मैत्री, स्नेहभाव, आपुलकीचा जिव्हाळा हवा. खरी मैत्री गरीब श्रीमंत, लहान मोठा असले भेदभाव तोडून टाकते. मात्र मैत्री सज्जनांची असावी, दुर्जनांची नको. सज्जनांच्या मैत्रीतून जगाचा उद्धार होईल, दुर्जनांच्या मैत्रीतून जगाचा विनाशच संभवेल. हे प्रेमाचे, स्नेहाचे क्षेत्र माणसापुरते मर्यादित न राहता सर्व प्राणी मात्रांपर्यंत पोहोचले पाहिजे. थोडक्यात मैत्र म्हणजे निस्वार्थी, सर्वसमावेशक प्रेम. हेच मानवी जीवनाचे, संस्कृतीचे आधारभूत सूत्र आहे. जगातील संतांनी व प्रशितांनी वेळोवेळी हा संदेश जगाला दिला. त्यासाठी कुठलीही शिक्षा, अगदी प्राणार्पणाची सुद्धा त्यांनी आनंदाने स्वीकारली आहे. तर पहिला भाग हा मी इथे आटोपता घेतो. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. और अब मैं लोखंडे जी को आमंत्रित करूंगा कि वे हिंदी में इसका सारांश कहें. अशोक जी का परिचय देना भी वैसा ही है. तीनों आज हमारे साथ जो है नेशनल लेक्चरर हैं और तीनों ही बहुत अच्छे सभी लोगों से परिचित है. फिर भी परंपरा अनुसार मैं एक छोटा सा उनका एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा. वे मास्टर डिग्री हैं कॉमर्स में, एमकॉम किया उन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में उन्होंने सर्विस की है. वे रिटायर हुए एक डिपो मैनेजर की तरह 2014 में. थियोसॉफी ज्वाइन की 1984 में और लाइफ मेंबर थियोसॉफी सोसाइटी के तो वे हैं ही. वे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं मराठी थियोसॉफिकल फेडरेशन के 2007 से 2016, यानी 16 के बाद नंदकुमार जी रहे तो दोनों ही भूतपूर्व मराठी प्रेसिडेंट्स हमारे साथ हैं. एक्स चेयरमैन रहे वो थियोसॉफिकल प्रोपोगेशन कमेटी वेस्ट जोन के और अभी वे नेशनल लेक्चरर हैं इंडियन सेक्शन थियोसॉफी वाराणसी के. साथ ही में नागपुर लॉज थियोसॉफिकल सोसाइटी धंतोली के प्रेसिडेंट भी हैं.
तो आइए अशोक जी हमें आशीर्वचन से परिपूर्ण कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद मुंशी जी। तरल जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बहुत क्लियर और अच्छे से है। तो आज के इस त्रिवेणी मीट में आयोजित सभा में सभी भाई और बहनों का मैं मनपूर्वक स्वागत करता हूं तथा आज का विषय जो पसायदान लिया गया है वह महाराष्ट्र के मराठी भाषी लोगों को परिचित है। पीढ़ी दर पीढ़ी उस पर विवेचन किया गया है और सभी मराठी जनों को ज्ञानेश्वर और उनकी फिलॉसफी इसके बारे में जानकारी है। तो सर्वप्रथम आपने मुझे मौका दिया और इस पर अपना भाष्य करने के लिए, बोलने के लिए एक अवसर प्रदान किया, इसलिए त्रिवेणी के आयोजक विशेषतः तरल जी का मैं प्रथम आभार व्यक्त करता हूं। थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा प्रचारित ब्रीद वाक्य यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व बंधुत्व के संत ज्ञानेश्वर प्रणेता रहे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के कुछ ग्रंथ में उनका उल्लेख भी मिलता है। माने मैं इसलिए बता रहा हूं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी और संत ज्ञानेश्वर जो है वह कहीं न कहीं लिंक है। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके माता पिता को तत्कालीन कर्मठ रूढ़िवादी धर्म मार्तंडों ने जल समाधि लेने पर मजबूर किया था। उसके बाद इन चारों बहन भाइयों को सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा, यहां तक कि उनको यज्ञोपवीत संस्कार भी नकारा गया और उन्हें उसके लिए बहुत सारी परीक्षा देनी पड़ी, टेस्ट देनी पड़ी, तब जाके उनको स्वीकृत किया गया। किंतु सामाजिक अनुभव के कड़वे घूंट पीकर भी उन्होंने मानवता तथा समाज के लिए कार्य किया है। उनका जीवन अलौकिक शक्तियों तथा सिद्धियों से भरा है। उनके जीवन काल में अनेकों चमत्कार उन्होंने किए हैं, जैसे भैंसे के मुंह से वेदों का पठन, पत्थर मिट्टी की दीवार को चलाना तथा योगाग्नि से स्वयं की पीठ पर रोटियां सेकना इत्यादि, जो मानवीय बुद्धि और तर्क से परे वे सिद्ध पुरुष थे। संत ज्ञानेश्वर का जन्म गांव आपेगांव ईस्वी सन 1275 में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम विठल पंत कुलकर्णी तथा माता का नाम रुक्मिणी बाई था। निवृत्तिनाथ संत ज्ञानेश्वर के बड़े भाई थे तथा सोपानदेव और मुक्ता भाई उनके छोटे बहन भाई थे। उनका जन्म गांव आपेगांव औरंगाबाद जिले के पैठण शहर के पास गोदावरी के तीर पर बसा हुआ एक छोटा सा नगर है। संत ज्ञानेश्वर द्वारा श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद नहीं कर सकते, उस पर उन्होंने भाष्य लिखा है जो सन 1290 में पूर्ण हुआ है। अहमदनगर जिले के प्रवरा नदी के तट पर बसे नेवासे गांव के मंदिर में यह ग्रंथ उन्होंने पूरा किया था। जन सामान्य को संस्कृत में रचित भगवद गीता पढ़ने में, समझने में असुविधाएं होती है। यह जानकर उन्होंने इस पूरे भगवद गीता को मराठी में भाष्य देकर, अनेक उदाहरण देकर जनता को समझेगा इतना सरल बनाया। इस भाष्य को ही भावार्थ दीपिका या ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। पूरी भगवद गीता के 18 अध्याय संत ज्ञानेश्वर द्वारा 9000 दोहों में, या इसको ओवी कहते हैं मराठी में, ये लिखा गया है।
जो अप्रतिम तथा मननीय और पठनीय। उस भाष्य के पूर्ण होने पर उन्होंने देवताओं से जो आशीर्वचन मांगा है, 9 दोहे उसके हैं, जो प्रसाद रूप में सारे जगत के लिए उन्होंने आशीर्वाद मांगा है, और वही पसायदान। पसायदान यानी सर्वोच्च दान। ऐसा कहते हैं कि जो स्वयं के लिए मांगा जाता है उसे भीख कहते हैं, जो परिवार के लिए मांगी जाए उसे भिक्षा कहते हैं, जो समाज तथा जन कल्याण के लिए मांगी जाए उसे दान कहते हैं, और जो संपूर्ण विश्व के लिए मांगी जाए उसे पसायदान कहते हैं। यहाँ पर संत ज्ञानेश्वर ने जो दान मांगा वह पसायदान है, और समस्त विश्व की कल्याण की कामना हेतु मांगा गया है, जिसका हम अभ्यास करेंगे। उन्होंने जो 9 प्रकार के 9 दोहों में जो एक दान मांगा है, तो पहला उनका यह है कि हे विश्व के सर्वत्र बसे देवता, तुझे यह मेरा शब्द यज्ञ रुचिकर लगे तथा उससे संतुष्ट होकर मुझे इतना ही कृपा प्रसाद या प्रसायदान प्रदान करे। मेरी वाणी से, वाणी रूपी यज्ञ से विश्वात्मक देवता आप संतुष्ट होकर मुझे आपका कृपा प्रसाद प्रदान करें। यहाँ पर विश्वरूप देवता की कल्पना कितनी उदात्त और सर्वसमावेशक है, इसका परिचय। खल जनों, वो दूसरे आशीर्वाद मांगते हैं तो कहते खल जनों, दुष्ट जन की कुटिलता समाप्त हो तथा उन्हें सत्कर्म में रुचि निर्माण, सभी प्राणी मात्र में परस्पर मित्रता उजागर होकर वृद्धिंगत हो। यहाँ पर खल यानी दुष्ट जन और कुटिलता यानी दुष्ट प्रवृत्ति। यहाँ पर संत ज्ञानेश्वर की महानता दृष्टिगोचर होती, जिसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं। साधारण जन यह अर्थ लगाएंगे कि दुष्ट जनों का नाश हो और सज्जनों का उन्नयन हो, किंतु ज्ञानेश्वर कहते हैं कि दुष्ट जनों की केवल दुष्टता नष्ट हो, क्योंकि दुष्ट जन भी हमारे ही बंधु है, केवल उनका रास्ता भटक गया है। इन्हीं दुष्ट जनों को, जनों के अंदर जो दुष्टता है वो समाप्त हो जाए और उन्हें सत्कर्म में, अच्छे कार्यों में रस निर्माण हो, और ऐसा होने पर सभी लोग अच्छे कल्याणकारी कार्य की इच्छा से प्रेरित होकर साथ साथ कार्य करेंगे तथा उनमें परस्पर स्नेह मित्रता निर्माण होगी, जो सभी के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी। ऐसी प्रबल आशा संत ज्ञानेश्वर ने व्यक्त की। वो आगे कहते हैं कि पाप का अंधकार लुप्त होकर जगत में स्वधर्म भास्कर का उदय हो, सूर्योदय हो, और जगत के समस्त प्राणी मात्र जो जो चाहेंगे वो उन्हें प्राप्त हो। दुष्ट जनों की दुष्टता का कारण उनका केवल अज्ञान है, उनके इस अज्ञान का अंधकार दूर हो, ऐसी प्रार्थना यहां पर की गई। स्वधर्म का अर्थ यहां पर हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई न होकर मनुष्य का धर्म, जो बंधुत्व, शुचिता, प्रेम, परस्पर सहकार्य इत्यादि जो मनुष्य होने का स्वभाव है, स्वधर्म है। जगत और सुखमय तथा शांति से भरा हुआ होने की अगर कामना है तो हर व्यक्ति ने अपना मनुष्य होने का स्वभाव, स्वधर्म का पालन ईमानदारी से करेंगे तो सभी की इच्छाएं पूरी होगी, क्योंकि स्वधर्म का आचरण करने वाले मंगल तथा पवित्र ही आचरण करेंगे, जो जगत तथा सभी के लिए कल्याणकारी है। मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आगे का जो भाग है वो अगले
इसमें जी, धन्यवाद लोखंडे जी। चंद्रकांत जी, आपको सभा समर्पित। Well, I must thank both NANDKUMAR RAUT or ASHOK LOKHANDE for explaining very nicely in Marathi and in Hindi. And also they took the verses of this Pasayadana. Actually, this Pasayadana, to let you know, it can be chanted. These are in the form of chanting verses. And they are chanted individually as well as collectively in Maharashtra, in group. This is what occult significance or esoteric significance of this prayer. So I would like to chant it first, all the 9 verses. I am not a good singer like Lathaji, but we can try, and we all must know that we must chant it. And it has got a rhythm. Ata Vishwatmake Deve Ene Vagayadne Toshave Tosho Nimazdya Pasaydanaye Je Khalanchi Venkati Sando Taya Satkarmi Rativado Bhuta Paraspare Jado Maitra Jivanche Duritanche Timir Jao Vishwaswadharma Surre Pao Joje Vanchi Latote Lao Prani Jat Varshata Sakala Mangali Ishwar Nistanchi Mandiali Anavarata Bhumandali Betatuya Bhuta Chala Kalpatarunche Arava Chetana Chintamani Che Gava Bolate Je Arnama Piyushanche Chandrame Je Alanchana Martanda Je Tapahina Te Sarvai Sada Sajjana Soyare Hotu Kimbona Sarvasukhi Purno Niti Loki Bhajizo Adi Purushi Akandita Ani Granthopajiviye Visheshi Lokiye Drushta Drushta Vijay Hova Veji Yethamane Sri Vishvesharao Ha Hui Ladana Pasao Ene Vare Jnana Devo Sukhiya Jala Sukhiya Jala Sukhiya Jala. This is what the Pasaydan is chanted. It has got rhythm of 4 steps. So 4 OVs are very important, very meaningful, very impressive, and very beneficial. If you chant individually as well as collectively, that creates an atmosphere. So when it says Ata Vishwatmake Jeve means it is, as it is explained already, it is may universal self be pleased. And Ene Vagayadne Toshavo means sacrifice of words. It is offering, not simply giving. It is offering of these words. It is sacrifice of the word. Yajna karma of the words. Ene Vagayadne Toshave. You must be pleased by such kind of sacrifice of words. And he is pleasing the universal self. And then being pleased, Toshoni Mazadyave Pasaydanami, being pleased, bestow the grace, give me as prasada. So this prasada is explained very well by the Lokhande, how it is prasada. Anything that gives or anything that you give with love, that becomes the prasada. So if you see this, this is devotion to divine. To be aware of this is meditation. Duty consciousness that purifies the soul. Buddhi gets purified by the true knowledge, and mind gets purified by the truthfulness. Once we know this, then this give and take is the ideal. The universe, the whole universe operates through dynamic exchange. Giving and receiving are 2 aspects of
flowing energy in the universe. So it is in our willingness to give that we seek. This is how ultimately within this law of giving and taking, keep the abundance of the universe circulating in our lives. For this purpose, he says, Ata Vishwatmake Deve, may the universal self be pleased by the sacrifice of words, offering of words, giving of these words, and give me as prasad back, bestow the grace. This is what the first OV says. Second, Je Khalanchi Venkati Sando, Taya Satkarmi Ratiwado, Bhuta Paraspare Pado, Maitra Jivanche. Khalanchi Venkati Sando means may sinner, may evildoer stop their evil deeds. And Satkarmi Rativado, stopping is the condition, is state of zero state, Shunyavastha. But that is not enough. Further he said, Satkarmi Rativado. So you can stop the bad habit. That is a state, one kind of attempt. But only stopping is not the ending of that bad habit. You must progress in good things. So Satkarmi Rativado, may his good karma increase. And then it is said, Bhuta Paraspare Pado Maitra Jivanche. This is what 9 things they have written here. So may all live in harmony, because life is relationship. And Maitri Bhuta Paraspare Maitra Jivanche. Here, Mitta Bhav, friendship. Life is relationship, and that friendship is expressed, because all this Jnaneshwari is nothing but the commentary on Veda, Upanishad, and all this. In Atharva Veda, this fellowship, Maitri Bhav, is very nicely explained. They are saying, we are the birds of the same nest. We may wear different skins. We may speak different tongues. We may believe in different religions. We may belong to different cultures. Yet we share the same home, Earth. Born on the same planet, covered by the same skies, gazing at the same stars, breathing the same air, we must learn to progress together. Oh, miserably perish together. Either we live together and progress together, or miserably perish together. Because a person can live individually, but can only survive collectively. This is what in the beginning I said. This survival is possible by such synergy. This is what the first OV says. Then the second OV says, third OV says, Duritanche Timiradao, Vishwadharma Surre Pao, Zoje Vanchila Tote Lao means, Durita means those who are ignorant, those who are darkness of the ignorance, and let that darkness of the ignorance go, just like our prayer, Tamasoma Jyotirgamaya, and Vishwadharma Surre Pao, which means Jnaneshwar appeals to the universal self. He is being yogi, and so he appeals and not complains, but asserts with humility his 3 demands to the universal self for progression and perfection. The first is, may the sinner stop his evil doing. Second is, may darkness of sin disappear and righteousness prevails. And third, may everyone keep the company of saints devoted to God. That is called Satsanga. That means, Duritanche Timirazao, Vishwaswadharma Surre Pao, Joje Vanchila Tote Lao,
And Varshata Sakala Mangali, Ishwara Nistanchi Mandiyali, Anavarata Bhumandali, Betutaya Bhuta. Here, let the good souls take the birth, reincarnate on the earth. Not only they should take the birth, but we must meet them. So somebody asked, a world teacher is going to take the birth to Radhaji, and is it happened or not? Then Radhaji said, yes, it happened and it finished also. So Krishnamurti was born and went also. But how many of us met him? So this is how Varshata Sakala Mangali, Ishwara Nistanchi Mandiyali, Betutaya Bhuta. So let there be union. That is very important here. When we say, may the sinner no longer commit evil deed, which means hatred must be replaced by love, evil must be replaced by good, fear must be replaced by courage, falsehood must be replaced by truth, pride must be replaced by humility, harshness must be replaced by gentleness, and worldliness must be replaced by divinity. This is how darkness of sin disappears and righteousness will prevail. He begged for this, and wickedness said, as intellect turns into pious and good deed. So JANAESVARI says, may all living beings bound themselves by friendly lives or Maitri Jiva, soul companionship. This is what very important he asks for, and that is what I think we must study. Then in the 5th it is said, Chala kalpatarunche arava, Chetana chintamani che gava, bolate je arnava piyushanchi. Here again, this is the description of the such great souls which are incarnating. How they are? They are like walking gardens. Kalpataru. Kalpataru is wish-fulfilling trees are called Kalpataru, Kalpavraksha. So these great souls which are incarnated, their description is given. They are like walking gardens, and they are wishful filling. Whatever you wish, that is fulfilled. And they are like Chetana Chintamani Che Gav, means their group, their colony. They form a village, they form a town, which is a living town, which is a vibrant village. And Chintamani, whatever you imagine, whatever you chintana, that wish will be fulfilled. And Bolate Je Arnava Piyushanchi. What they talk, it is really like Amrut. Piyush means Amrut. So this is the description of those great souls which they reincarnate. So the JANAESVARI asks, let such great souls come and reincarnate. Not one, but Mandiyali, Ishwara Nistanchi Mandiyali. Let many souls come. Only such souls, if they come, then only there will be the progression and perfection of humanity. This is what it happened. Some great souls came from the planet Venus on Earth, and they gave direction to the men here. That is what we study in Theosophy. This is what he begged for. In course of evolution, human being, his hands are made free, and they are made free to help brothers. Legs are made free to walk, and these are the walking gardens. That is what it is said. Then in the 6th verse it is said, Chandrameje Alanchana. Again these great souls are described. How they are like moon. Moon is very pleasing, very wonderful. Many get lunatic in
seeing the moon also. So they get affected emotionally also. So moon is so effective to the mind. Such kind of moons, how these great souls are, they are like Chandrameje Alanchana. They are like moon. In that moon also there is some stain, there is some black spot, and that black spot there should not be. So Alanchana, there are no black spots on the moon. So such full moon, Chandrameje Alanchana, moon without any kind of blemish on him. So here moon is compared to the mind. Our mind must be like such moon, without any gathering the dust. Always there should be what we say, breeze of the soul. That is what in the Voice of the Silent it is said. And they are compared with the sun also. These great souls, Marthanda, Je Tapahina. Sun is always better. He gives heat. Without heat, we can't carry on everything. So sun is very important for the light. But when he becomes hot, then we run to our shelter. So sun without heat, moon without blemish, and te sarvai sada sajjana soyare. Because such souls, they can reincarnate and they become the kith and kins of the all human beings. Soyare hotu. May these saints be friends of all. So this is what it means. If we compare this mind with the moon and sun with the buddhi, and then it is said that let there be buddhi manasa. It is only buddhi manasa that raises to the higher level. That is what he begged for. Then seventh it says, Kimbona sarvasuki, purna honi tihi loki, bhajizo adi purushi akandita. And again he asked for the whole humanity. Those who are beings completely satisfied and those who are very happy in this worldly life, who are fully contented in all the three worlds, physical, emotional, and mental, may they worship the universal self, the ultimate divine, engrossed and merged in the devotion eternally. Because there are many people who are very wealthy, very happy, very satisfied, but satisfied with the comforts, but they are not having peaceful mind. So peaceful mind, for such peace, they are wealthy but not peaceful. So in such things, what he said, may they worship that universal self. That means, again, H.P. Blavatsky also gave this hint. Let the link be unbroken. So that is what he said. Let all beings be completely satisfied and happy. Let all be contented in all these three worlds, physical, emotional, and mental. And may they worship that universal self ultimately. So, Kimbona Sarvasuki, Purnohuni Tiloki, Bhajizo Adi Purushi, Akandita. And then again he asked for those people, Ani Granthopajiviya. There are many intellectuals, very talented people. Granthopajiviya, when they are attached to the scriptures, whatever great saints and sages have said, they believe in it, they follow it. And may those for whom this book is their life, all those who live by this scripture, Visheshi Loki, he calls them as a special. You know, we all chant, but Lata Mangeshkar also chants this Pasayadaan. So she is the Visheshi, because not only she chanted,
She made it known to the whole world. This is what a tribute to the Lataji, because she made it known. That is what these kind of people are Visheshi Lokiye. These are special. They are special because they are eternally guided all the living beings. And Drushta Drushta Vijaye Hova Viji means all these, those who are believing in the books, scriptures, and books and scriptures are their life, and all who are special in this sense, propagating this knowledge of divinity to whole world, let they also be blessed with the both visible and invisible world. Means at this end, also at the other end. And lastly, ninth one, Yeth mane Sri Vishvesharao, ha hoil dana pasao, ene vare jnana devo sukya jala. Who is this Vishvesharao? So this Vishvesharao is the pure consciousness, universal consciousness. This is the void or emptiness, which we use the words in Theosophy. This is what the choiceless awareness state of consciousness, which is content-free consciousness, which is also a Buddha consciousness, Krishna consciousness, or Christ consciousness. So it is this indweller of all, in all of us. He is omnipresent, omnipotent, omniscient. So such a universal consciousness, Sri Vishvesharao, how will dana pasao? Only in such state of consciousness, one can get everything. When you become empty, you get everything. But we are not ready to become empty. And this is how ene vare jnana devo sukya jala. So with this, if this is what emptiness is given, but such kind of happiness comes strangely, it is all tribute to the Lataji. I have become very brief in all this, and I cannot explain much, but only thing I can say end. After these Vagyajna, it is a really salutation and prostration to this Pasaydana, because he asked not for himself, but for all living beings, especially for humanity, that may there be togetherness, may we work together in peace and harmony, may enjoy the fruits of their efforts by sharing with others, may they not be jealous of others' achievements, may peace prevail on earth, and grant, O universal self, understanding heart, balanced mind with equal vision, faith, devotion, and wisdom, strengthen to resist the temptations. We are always getting tempted. It is not easy to resist the temptation. So strengthen to resist the temptation and free all of us from egoism, lust, greed, hatred, anger, and jealousy. This is what we pray, and this is the universal prayer which is mentioned in this Pasaydan. Thank you for giving me this opportunity. We can discuss on this if you have any. Yes. Okay. चंद्रकांत शिंदे जी, बहुत बहुत ज्ञान मिला आज और अद्भुत आपने ट्रांसलेशन किया। मराठी के लिए मैं नंदकुमार राव जी से कहूंगा कि वे कैरी ऑन करें। धन्यवाद। अनम्यूट करिए राउत जी, अनम्यूट करिए। थैंक यू। ओवी क्रमांक 3, दुरितांचे तिमिर जाओ, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछील तोते लाहो प्राणी जात। अंधार नष्ट व्हावा व विश्वाला स्व
धर्म सूर्याचे दर्शन घडून त्या प्रकाशाने विश्व उजळून जावे. येथे धर्म म्हणजे हिंदू मुस्लिम असा अर्थ नाही, तर धर्म म्हणजे कर्तव्य, प्रत्येकाने आपल्या वाट्याला आलेले कर्तव्य, अहंकार व फळाची आशा सोडून करणे हा त्याचा स्वधर्म होतो. तसेच ज्याला जे जे हवे आहे ते त्याला मिळो ही मागणी केवळ माणसांपुरतीच मर्यादित नाही, तर ती सर्व प्राणी मात्रांचा समावेश करणारे. ओवी नंबर 4. वर्षात सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतू भूता. वर्षात सकळ मंगळी म्हणजे सर्व मांगल्याचा वर्षाव करणारे अशा ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी म्हणजे ईश्वरनिष्ठ समूह. आणि ईश्वर निष्ठांच्या अस्तित्वामुळे, त्यांच्या सहवासामुळे दुष्टांचा दुष्टपणा जाऊन त्यांच्या सत्कार्यात गोडी लागते व सगळीकडे मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण होतात. ओवी क्रमांक 5. चला कल्पतरूंचे आरव, चेतना चिंतामणीचे गाव, बोलते जे अर्णव पियुषाचे. पुढील 2 ओव्यांमध्ये ज्ञानेश्वर माऊली ह्या ईश्वर निष्ठांचे अलौकिक महात्म्य सांगतात. ते कसे आहेत, त्यांचे गुणवर्णन करतायत. कल्पवृक्षांच्या छायेत, आपण जर कल्पवृक्षाच्या छायेत बसलो की माणसाच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात असे म्हटले जाते. परंतु कल्पवृक्ष हा एका ठिकाणी स्थिर आहे. उलट ईश्वरनिष्ठ संत हे चालते बोलते कल्पवृक्षांचे बगीचे आहेत. मग ते तुम्हाला तुमच्या चांगल्या व योग्य इच्छाच पूर्ण करतात. चिंतामणी हे सुद्धा रत्न सुद्धा मनातील इच्छा पूर्ण करते. तसेच समुद्र हा विशाल आहे, परंतु त्याची चव खारट आहे त्यातल्या पाण्याची आणि तो बोलू शकत नाही. परंतु संत हे अमृताचे चालते बोलते समुद्र आहे. ओवी क्रमांक 6. चंद्रमे जे अलांछन, मार्तंड जे तापहीन, ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतु. चंद्र हा शीतल सुखद जीवनदायी व प्रेम निर्माण करणारा, पण या चंद्राला सुद्धा डाग आहेत, चंद्राला कला सुद्धा आहे आणि तो विशेष म्हणजे तो स्वयंप्रकाशी नाही. या उलट संत हे निरंतर शुद्ध, चारित्र्यवान, निर्मळ व आत्मनिर्भर आहेत. म्हणजेच ते अलांछन चंद्रमे आहेत. तसेच सूर्याचे तेज व मानवी जीवनातील याचे महत्व अवर्णनीय आहे. पृथ्वीवरील सर्व व्यवहार सूर्याच्या उगवण्याने सुरू होतात. सर्व प्राणी मात्रांचा तो जीवनदाताच आहे. पण सूर्याचे तेज दाहक आहे आणि भाजून काढणारे आहे. ईश्वरनिष्ठ संत मात्र सूर्यासारखे तेजस्वी असूनही शीतल, आत्मनिर्भर व अलिप्त आहे. असे हे संत सज्जन लोकांना आपले वाटायला हवेत. त्यांच्याबद्दल आत्मीयता वाटायला पाहिजे व आपल्या जीवलगांसारखी संतांशी आपण जवळीक करायला हवी. संतांविषयी अशी आत्मीयता वाटली तरच ते सर्वांचे उद्धकारक ठरतील. ते लोकांचे सोयरे म्हणजे हित पाहणारे जवळचे आत्मीय होत, अशी मागणी संत ज्ञानेश्वरांनी केली. ओवी क्रमांक 7. किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होऊनी तिन्ही लोकी, भजिजो आदी पुरुखी अखंडित. म्हणजे ज्ञानेश्वर माऊलींच्या अशा लक्षात आले की या सर्व फुटकळ मागण्यांची यादी वाढवण्यापेक्षा अशी एकच मागणी करावी, म्हणजे सर्व मानवजात कायमची सर्व सुखी होईल. या सर्व अनेक मागण्यांपेक्षा किंबहुना हे परमेश्वरा अधिक काय मागायचे, सर्व मागण्यांचे सार तेच मला द्या म्हणजे झाले. त्रिभुवनातील सर्व लोकांनी सुखाने पूर्ण व्हावे आणि सतत परमात्म्याची भक्ती करावी, हाच वर हे सर्वात्मक देवा तुम्ही मला द्या. संपत्ती, सत्ता अशी हे साधनच द्या, साध्यच द्या आणि अशी ज्ञानदेवांनी मागणी केली आहे. या ओवीतील सर्व सुखी हा शब्द फार महत्वाचा आहे. सुख ही सर्वांचीच आवडती मागणी आहे. आपली नेहमी सुखाचीच
अपेक्षा ऐहिक इंद्रियजन्य सुखाची असते. ज्ञानेश्वर माऊलींनी सर्व सुख हा द्वयर्थी शब्द वापरलेला आहे. सर्व हे एक विष्णूचे नाव आहे असा विष्णू सहस्त्रनामात श्लोक क्रमांक 7 मध्ये उल्लेख आहे. म्हणजे सर्व सुखच मुळी परमेश्वर रूप आहे. ज्याला हे ज्ञान झाले तो सर्व सुखी. या सर्व सुखाचे पूर्णत्व तिन्ही लोकी त्यांना लाभावे ही माऊलींची प्रार्थना. तिही लोकी म्हणजे ज्ञानेश्वरांनी दुहेरी अर्थ योजला. तिही म्हणजे तिन्ही. आत्मा हे भगवंताचे रूप आहे व त्या जाणीवेच्या सुखाचा पूर्ण अनुभव मिळावा व त्या आदिपुरुषाची भगवंताची भक्ती त्यांनी अखंड करावी म्हणजे त्यांना दुसरी कोणतीही इच्छा करण्याचे प्रयोजन राहणार नाही. ओवी क्रमांक 8. आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकीये दृष्टादृष्ट विजये होवावेजी. सर्वांसाठी सर्वोत्तम सुखाची मागणी केल्यानंतर श्री ज्ञानेश्वर माऊलींच्या लक्षात आले की आपला एक भक्तवर्ग राहून गेलेला आहे. गीता ज्ञानेश्वरी ग्रंथांचा सर्वसामान्यापर्यंत वावर पोहोचवणारा, त्यांच्या अभ्यासाचा प्रचार व प्रसार करणारा वर्ग जरी उदरनिर्वाहासाठी हे काम करीत असला तरी तो एक संत कार्य किंवा सत्कार्य करीतच आहे. त्यामध्ये ग्रंथाचे प्रकाशक, प्रचारक, कार्यकर्ते, धर्मग्रंथावर समीक्षा लिहिणारे लेखक, सुश्राव्य संगीताच्या साहाय्याने तळागाळापर्यंत या धर्मग्रंथाची महती पोहोचवणारे प्रवचनकार, कीर्तनकार, भाष्यकार, भजन मंडळी सर्वजण आपापल्या सेवा कार्य करीतच असतात. हे जरी लोक आपले कार्य उदरनिर्वाहासाठी करीत असले तरी दृष्ट म्हणजे दृष्टीच्या आवाक्यातील किंवा ऐहिक किंवा भौतिक आणि अदृष्ट म्हणजे दृष्टीच्या पलीकडील किंवा पारलौकिक या दोन्ही लोकी त्यांनी यशस्वी व्हावे अशी मागणी केलेली आहे. आणि या ओवी बरोबरच आठव्या क्रमांकाच्या ओवी बरोबर श्री ज्ञानेश्वर माऊलींचे मागणे संपते. आता या मागणीला विश्वरूप भगवान काय प्रतिसाद देतात ते आपण पुढच्या शेवटच्या ओवीमध्ये बघू. ओवी क्रमांक 9. येथ म्हणे श्री विश्वेश्वराओ हा होईल दान पसावो येणे वरे व ज्ञान देवो सुखिया झाला. संत श्री ज्ञानदेव यांनी विश्वात्मक देवाला मागणी केल्यानंतर भगवंताचे उत्तर तात्काळ त्यांच्या अंतःकरणात निर्माण झाले. वत्सा तुझा दान पसावो तुला दिला. त्याच वेळी समोर बसलेले भगवंत रूपी सद्गुरू उद्गारले, ज्ञानोबा तुझा प्रस्ताव मान्य झालाय. आणि या वरदानाने आनंदित झालेले ज्ञानदेव सुखिया झाला म्हणजे संतुष्ट झाले, सुखावले. आणि एवढा उदात्त उत्तुंग पातळीवर पोहोचलेला हा सर्वकष आनंद, भक्तीची परिसीमा, इथेच ज्ञानेश्वरांचे पसायदान संपते. श्री ज्ञानेश्वरांचे पसायदान ही सर्वार्थाना एक अलौकिक प्रार्थना आहे. परमेश्वराजवळ अनेकांनी प्रार्थना केल्या आहेत, पण इतकी सर्वसमावेशक, सर्वांच्या कल्याणाने भरलेली, धर्म, देश, काल या सर्वांच्या अतीत अशी ही प्रार्थना अतुलनीय आहे. म्हणून आपण सर्व भाषिकांनी श्री ज्ञानदेवांचे सदैव ऋणी राहिले पाहिजे. ओम शांती. येथे पसायदान संपवलंय. थँक्यू. बहुत बहुत धन्यवाद राउत साहब. लोखंडे जी, सर आपका वीडियो ऑन कर दीजिए. अशोक जी. अशोक जी. हेलो. अशोक जी वीडियो ऑन कीजिए प्लीज. I think there would be the net problem with Lokhande ji perhaps. His name is seen on the screen, Ashok Lokhande.
I will ask him to unmute. Taralji, should we wait for him? I'll just make a call, or we can go ahead with the discussion. Yes. I think. Okay. अशोक जी का नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तो तब तक वे जब आएंगे तो हिंदी में कर देंगे। लेकिन किसी को भी प्रश्न या कुछ पूछना हो तो चंद्रकांत जी हैं, राउत साहब हैं, आप Chandrakant ji, I would like to ask. Tell me. Pasaydan. Most of the time we have seen that the saintly people had suffered a lot. Yeah. Right, and that was the real test, ordeals they had to go through, and these kinds of ordeals were there mostly in the worldwide way, where the saintly people had to suffer, starting from the philosophers like Socrates also, then coming to the particular word of saintly people in Gujarat also, Narsi Mehta also, Santa Jnaneswar also. I saw that film Santa Jnaneswar when I was in 5th standard. The most popular song of Lataji and Mukesh, Jyote se Jyote Jagate Chalo, that was from Santa Jnaneswar, and it was really a kind of movie which attracted the attention of the whole country. So I think that this kind of thing happened even in Theosophical Society also. Certain people had to pass through certain ordeals because they wanted to establish the things which were highly related with the truth. So what do you remark about this? Very good question, brother Arshad, because it is such a spiritual path, Nivrutti Marga. It is exactly opposite to the worldly path. And when you go ahead with this path, it is like a razor's edge. And more you travel forward, more you become sensitive, and all bad qualities, they come to the surface. Otherwise, they were hidden into the subconscious. And when they come to the surface, then they express. And these are troublesome also for the one who is the aspirant. That is one reason. Secondly, this path itself is the thorny path. So there are difficulties, there are tests, there are trials. All these are there, and the disciple or aspirant knows well that these trials are for testing, and all saints, we see such kind of trials and tests. It is this Nivrutti Marga where we have such kind of hurdles, and we have to overcome those. That is what I think. It is not, in fact, if there are no hurdles, means we are not progressing. That is also true. Right. Yes. Oh. I would like to suggest that what Lokhande ji is to speak in Hindi, I think you can speak in Hindi, Shinde ji. No. Or Nandkumar ji should try. Yeah, Nandkumar can speak. Yes. Because he is joining. Ashok ji is joining. Yeah. Okay, no problem. In the meantime, Raghunath Das ji has some questions. Please go ahead. Raghunath ji has come. Okay. Namaskar. Very blessed to hear you all. Pasaydaan. I came to know this meeting from my beloved Guru, Sri Srinivasan sir, Dr. Srinivasan. And I have a small question to Nandakumar ji. While he was, while you were telling about the Charitra, you mentioned that Jnaneshwar Maharaj was born in Apega. तरल जी, हेलो तरल जी। हाँ अशोक जी, आइए, आपका वीडियो ऑन हो सकता है?
नहीं, उसमें मुझे मैसेज आया है कि आपके इसमें प्रॉब्लम है, फेल टू स्टार्ट द वीडियो कैमरा। ओके, आप अपना एक ये क्वेश्चन पूछा है रघुनाथ जी ने, हाँ, तो वो हाँ, हो जाए उसके बाद आप हिंदी का अपना शुरू करिए। जी। धन्यवाद। यस रघुनाथ दास जी। So I studied that in Namdev Maharaj Gata, Namdev Maharaj have mentioned that Namamane Purna Brahma Jnaneshwara Ghetase Avatar Alankapur. That was the contrary. So according to Namdev Maharaj, is that he took birth in Alandi. That's what the belief also. And Vittalpan Kulkarni is the Mool Purush of Apegaon. So if you have any other this correction, you please correct me. Thank you, sir. राउत जी अनम्यूट कीजिएगा। चंद्रकांत जी आप भी आंसर दे सकते हैं। लोखंडे जी आप भी। हेलो, हाँ, मेरा आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है सर। ये एक हाँ, क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर हो जाए फिर आप प्लीज आ जाइए। मैं आंसर नहीं सुन पाया। आळंदी में उन्होंने समाधि ली थी, संजीवन समाधि, लेकिन उनका बर्थ जो हुआ था वो आपे गांव में हुआ था। क्या मैं करेक्शन कर सकता हूँ? जरूर जितेंद्र जी, जरूर। हाँ बोला जितेंद्र जी आइए। मैं हाल ही में चरित्र के ऊपर एक सर आपका ऑडियो डिस्टर्ब। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है सर। हाँ, अभी हाल ही में मेरी संत चरित्र के ऊपर एक किताब प्रकाशित हुई है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि ज्ञानेश्वर महाराज के पिता वह आपे गांव में रहने वाले थे और उनकी पत्नी जो थी वह आलंदी से बिलोंग करती थी। उनके पत्नी के जो म्हणजे ज्ञानेश्वर महाराज के जो पिताजी थे विठ्ठल पंत, उनके कहने पर उनके माता पिताजी गुजर जाने के बाद वो खुद जाके उनको लेके आए वहां से, और बाद में वो आलंदी स्थायिक हो गए। ये है आपे गांव तो उनका पिताजी का था। इन चारों बंधुओं का और भगिनी का जो जन्म है वो आलंदी में हुआ है और वहीं पे उन्होंने समाधि ली है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब लोखंडे जी से आग्रह करूंगा कि वे अपना हिंदी में चालू रखें। वेरी सॉरी कि मेरे कैमरे में प्रॉब्लम है और मैं कैमरे पे नहीं आ सकता हूँ, लेकिन जो बचा हुआ है उसको मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ज्येष्ठ बंधु शिंदे सर द्वारा तथा राउत सर द्वारा पसायदान के सभी ओरिजिनल मराठी वर्जन गाया गया। इन सभी दोहों का मैं हिंदी में अर्थ बताने का तथा संत ज्ञानेश्वर की महानता को प्रस्तुत करने का प्रयास इस दूसरे भाग में करने जा रहा हूं। वहां का जहां से शुरुआत कर रहा हूं वो है की वर्षतू सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदी आई, अनवरत भूमंडळी भेटो तया भूता। यहाँ पर ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि सभी जगत पर जो कल्याणकारी कृपा की अविरत निरंतर वर्षा करते हैं, ऐसे ईश्वरनिष्ठ जनों के मंडल, वहां पे शब्द किया है मांदियाड़ी, माने ग्रुप। उसको हम व्हाइट ब्रदर कह सकते हैं, सिद्ध संघ कह सकते हैं, या महात्माओं का समूह का आशीर्वाद इस जो अनविरत ढंग से इस पृथ्वी पर बरस रहा है वो सभी को प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद मांग रहे।
ऐसी मांग कर रहे हैं विश्वात्मक देव भगवान से। सभी प्रकार के मंगल, शुभ और पवित्रता की वर्षाव करने वाले महात्माओं का समुदाय इस पृथ्वी पर जन्म लेकर पृथ्वी के सभी प्राणी मात्रों को उनकी सानिध्य का लाभ हमेशा मिलता रहे। संत ज्ञानेश्वर यहाँ पर आदर्श मानवीय समाज की कल्पना कर रहे हैं। भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करने वाले जन सामान्य भी ईश्वर निष्ठ लोगों की श्रेणी में आएंगे और वह अपने जीने के ढंग से विश्व पर शुभ तथा मंगल का वर्षाव करेंगे, ऐसा आत्मविश्वास प्रकट करते हैं। आगे है 5वां श्लोक। उन महात्माओं के गुणों का वर्णन वे आगे करते हैं कि जो कल्प वृक्ष यानी जिस वृक्ष के नीचे बैठे तो सारी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसे वृक्ष को कल्प वृक्ष कहा जाता है। जो कल्प वृक्षों के घने उपवन हैं, उद्यान हैं, जो सचेतन जीवित चिंतामणि सदृश्य नगर है और अमृत तुल्य वाणी के महासागर है, उनका वर्णन जो कर रहे हो महात्माएं कैसे। ईश्वर निष्ठ महात्माओं का वर्णन बड़े सुंदर शब्दों में उन्होंने किया है। वह कहते हैं कि यह महात्मा सज्जन लोग कल्पतरुओं की उद्यान है, उपवन है। उसी प्रकार यह सज्जन चिंतामणि जो सारी इच्छाएं कामना पूर्ण करने वाला रत्न है, उसी के रत्न के नगर जैसे है तथा मृत्यु से संरक्षण करने वाले अमृत के जीवित समुंदर है। आगे जाकर संत ज्ञानेश्वर इन महात्माओं का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि जैसे चंद्रमा जो कलंकहीन और जैसे तापविहीन सूर्य हो, वे सभी महात्मा सर्व जीवों के हमेशा स्वकीय हो। दाग यह चंद्रमा पर लांछन है तथा ताप उष्णता, ताप यानी उष्णता, यह सूर्य की जगत को जला देने वाली क्वालिटी है। उसी प्रकार अति भस्म कर देने वाली गर्मी सूर्य का वैगुण्य है। किंतु यह सज्जन महात्मा चांद जैसे किंतु दाग विहीन तथा सूर्य के समान तेजस्वी किंतु आग रहित, जिनके ऐसे है जिनके सभी दोष दूर हो चुके हैं और वह केवल सद्गुणों के प्रतीक हो। स्वयं के दुर्गुणों पर जिन्होंने विजय प्राप्त किया हो, ऐसे सज्जन सर्व प्राणियों के स्वकीय और प्रियजन हो। सर्व सुखों से इन तीनों लोकों में परिपूर्ण होकर अपने अंतरतम में उस आदि पुरुष का निरंतर भजन में रत रहे। सर्व विश्व, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल समस्त सुखों से परिपूर्ण होकर सभी जीव मात्र विश्व के आदि पुरुष का गहरे मन से निरंतर भजन करे, ऐसा यहाँ पर ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। ऐसा करते हुए सभी जीव मात्र इस लोक में तथा उस लोक में अपार सुख प्राप्त करेंगे, ऐसा दान अपने गुरुदेव से संत ज्ञानेश्वर मांग रहे हैं। आगे वो कहते हैं, 8वां उनका जो दोहा है, यहाँ ग्रंथ यानी भगवद गीता, ज्ञानेश्वर, इस ग्रंथ को ही जिन्होंने अपना जीवन बना लिया, इसका प्रत्येक श्लोक, हर एक सीख जीवन का हिस्सा हो गया। दैनंदिन जीवन इस सीख तथा संदेशों का कड़ाई से पालन करना तथा दृश्य अदृश्य सभी सांसारिक वासना और भोगों पर विजय प्राप्त करना, यही संत ज्ञानेश्वर का समस्त मानव जाति को प्रेम पूर्वक संदेश। संसार में सभी लोगों की छोटी मोटी आशाएं, आकांक्षाएं होती है और सभी इच्छाएं भौतिक सुख, संपत्ति इत्यादि प्राप्त करने की होती है तथा स्वयं केंद्रित होती है। इन स्वयं या मैं से पार जाकर विश्व कल्याण की प्रबल आकांक्षा ही शेष रहे, ऐसा आशीर्वाद, आशीष यहाँ पर
संत ज्ञानेश्वर अपने गुरुदेव से मांग रहे हैं, विश्वात्मक भगवान से मांग रहे हैं। और पसायदान के अंत में संत ज्ञानेश्वर द्वारा मांगे गए इस पसायदान कृपा प्रसाद उदात्त तथा भव्य और दिव्य है। संत ज्ञानेश्वर जिस प्रकार के मनुष्य की कल्पना कर रहे हैं वैसे वह स्वयं बन चुके हैं और इस ऊंचाई पर पहुंचे शिष्य की याचना सद्गुरु कदापि अमान्य नहीं करेंगे। इसी याचना को उनके सद्गुरु निवृत्तिनाथ महाराज ने स्वीकृत करते हुए उन्हें आशीष दिया, जिससे संत ज्ञानेश्वर परम सुख को प्राप्त हो गए। तो ये जो ज्ञानेश्वरी का अंतिम श्लोक है, 9 श्लोक, इसमें सारे चराचर विश्व की मंगल की कामना ज्ञानेश्वर महाराज ने की है। थियोसॉफी में भी इसका उल्लेख है कि जो ईश्वर निष्ठा है, जो कृपा है, वो हमेशा बरसते रहती है। बस अपने आप को उसको रिसीव करने लायक तैयार करना, यही साधना है, यही तपश्चर्या है। यहाँ पर तरल जी मैं रुकता हूं। धन्यवाद। आपने त्रिवेणी में मुझे बुलाकर यहाँ बोलने का अवसर दिया और मेरा कैमरे में फॉल्ट होने के बावजूद भी आपने बड़ी आस्था से सुना, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद लोखंडे जी, बहुत बहुत। और आपने भी उसे इतने अच्छी तरह से कहा, वो बहुत बढ़िया रहा। और मैं वापस पुनः लेकर आता हूँ हमारे आज के वक्ता शिंदे जी को और राउत जी को, और अक्षर लोखंडे जी भी हैं ही यहाँ पर। तो कोई अन्य प्रश्न हो या कुछ हो तो वो कह सकते हैं, जिसे भी पूछना हो कृपया आप पूछ सकते हैं। हाँ रघुनाथ जी बोलिए। रघुनाथ दास जी। सर्व शब्दाचा अर्थ आहे विष्णू असा चांगला सांगितलं। सर्व शब्द विष्णू सहस्त्रनामामध्ये 4th श्लोका is that सर्व सर्व शिवस्थानो. It's not the 7th shloka, that's also a correction. So the 4th shloka is sarva shabda is coming. Thank you very much. Okay. Anyone else? अरुण जी, अरुण पलकृत जी हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा कि वे अगर अपना वीडियो ऑन करें तो मैं उन्हें स्पॉटलाइट कर सकता हूँ। जी जी जी। हाँ, हेलो। हाँ जी कहिए। हाँ नमस्ते। हाँ तरल जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार जी, आइए कहिए। नमस्कार नमस्कार। हाँ, आपने जो अरेंज किया है बहुत ही अच्छा अरेंज, मुझे टेक्निकली आपने बहुत अच्छा अरेंज किया है इसको। बहुत बहुत अच्छा लगा, सुनना भी अच्छा लगा। बाद में जो किया उन्होंने बहुत अच्छा लगा। खूब खूब धन्यवाद। और अरुण जी आपने ही इसका अनुवाद वगैरह किया था, ऐसा मुझे कहा गया है, तो धन्यवाद आपकी अनुवाद आज काम आए। जी। और विनायक जी हमारे बॉम्बे प्रेसिडेंट भी हमारे बीच में हैं, तो कहिए कुछ विनायक जी। थैंक यू तरल जी, शिंदे सर को, नंद कुमार जी को और अशोक जी को सुनने का एक त्रिवेणी मौका मिला। मराठी फेडरेशन के तीनों स्टालवर्ड्स जो है और उनको एक ही साथ में, और जो संत ज्ञानेश्वर की जो बात है करके, जो कि ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो अपना सेकंड उद्देश्य है उसके साथ कंपैरेटिवली काफी नजदीक आता है और वो भी वही सत्य की बात करते हैं। और जैसे कि कहा है कि अपने जो अभी के प्रेसिडेंट है टीम बॉयड, तो बोलते हैं कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग। तो जो परिवर्तन जो आप ला रहे हो मीटिंगों में भी, एक टॉपिक में और दूसरे में, वो भी काफी
इम्पोर्टेंट है और उसकी वजह से काफी लोगों की रुचि भी आती है। और अपना आपका ये प्रयास में प्रोफेसर शिंदे सर का, नंदकुमार राउत जी का हमेशा सपोर्ट है, अशोक जी का भी सपोर्ट है, हर्षवर्धन सेठ का सपोर्ट है, काफी लोगों का सपोर्ट है और काफी स्पीकर्स आपने तैयार किए हैं और ये मैं त्रिवेणी की बड़ी भेंट समझता हूँ। थैंक यू वेरी मच और ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू थैंक यू। हमारे मराठी के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो आज नहीं आ सकते हैं क्योंकि वो कहीं व्यस्त है, इसलिए अरुण जी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा एक बात करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, बोलिए सर। हाँ, मैं अभी ये जो पसायदान है, ये पसायदान से मैं बहुत प्रभावित हो गया था और इस प्रभावित होने के कारण मैं कुछ चीजें शिंदे हमारे जो बात किया उसके ऊपर, और मुझे कैसा लगा कि अगर मराठी में जो पसायदान है उसको और अपन अलग अलग भाषाओं में क्यों नहीं उसको ये करें, पब्लिश करें। तो उस हिसाब से मुझे वो एक आइडिया आ गया और उसके हिसाब से मैं हर भाषा के ट्रांसलेशन थ्रू गूगल मैंने किया है उसके। तो उसमें हर करीब 10 भाषा का मैंने उसको ट्रांसलेशन किया है। उसमें मराठी, हिंदी आ गया, गुजराती आ गया है, तमिल लिया है, तेलुगु लिया है, उड़ीसा लिया है, मलयालम लिया है, ऐसे बहुत सारे भाषा का मैंने इसका स्लाइड्स तैयार किया है। और मेरी एक इच्छा है कि ये सब स्लाइड्स सब फेडरेशन को मैं भेजना चाहता हूँ और उसका जो इसमें इंग्लिश का पसायदान का इंग्लिश ट्रांसलेशन मीनिंग लिखा है उसका ट्रांसलेशन मैंने अलग अलग भाषाओं में करके रखा है, तो वो हर फेडरेशन तक पहुँचे ऐसी मेरी एक इच्छा है। तो कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ ही दिनों में अगर उनका मुझे ईमेल मिल गया और अगर व्हाट्सएप पर उनके नाम अगर मुझे मिल गए तो उनको मैं वो भेज सकता हूँ। खूब खूब धन्यवाद सर। जी अरुण जी, आपकी बहुत ये इच्छा है तो कुछ फेडरेशन से मैं भी इस वक्त ताल्लुकात कर रहा हूँ और शिंदे जी हैं, विनायक जी हैं, नंदकुमार राउत जी, हर्षवर्धन जी हैं, हम सब मिलकर ये कोशिश करेंगे कि ये हर भाषाई फेडरेशन तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हेलो। हाँ जी, हाँ श्रीराम जी। अरे रमेश भाई बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। हाँ सर, आपका वीडियो ऑन कीजिए ना रमेश जी। हाँ जी हाँ अभी सॉरी। हाँ जी शिंदे साहब नमस्ते। हाँ सॉरी मेरा आवाज थोड़ा वो है, डिस्टर्ब है। बोलिए। ये जो अच्छी आत्माओं के बारे में जो वर्णन किया वो बहुत ही अच्छा है और ऐसे बहुत से आत्माएं हमने देखे भी, मगर इसके बारे में क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज होता है ऐसे ऐसे आत्माओं के आने में या उनके विशेष रूप से हमें बताने में कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि जीने का ढंग इंसानों का बदल जाता है, उसका जो रहने का ढंग है वो भी बदल जाता है, इच्छाएं आकांक्षाएं सब बदल जाती है। तो इसके अनुरूप क्या आत्माएं आएगी या वैसे ही? क्योंकि अभी के क्षेत्र में तो कोई दिखाई नहीं देते हैं अच्छे ऐसे इंसान के जो रमेश भाई विश्व को ज्ञान दे सके। रमेश भाई, you are very correct, because if such great souls they come, they have their own influence. Buddha came and lot of influence was there. Jesus came, lot of influence was there. In the same way, Krishnamurti came and whole human consciousness has changed. So such great souls, if they come and reincarnate, lot of changes will take place. That is what Shankaracharya also it is said. If they come and if they form a satsanga, we must meet them in that vibrations. तो शंकराचार्य ने जो कहा है सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्ममत्वम, निर्महत्वम निर्लिप्तत्वम और निर्लिप्तत्वम जीवन मुक्ति. So if they come and if we form that kind of satsang with them, there will be definitely change in the humanity.
And as you said, it is happening. Now new souls are getting birth. New generation is different in their consciousness. And you can even examine it. And it is all divine plan. It is happening. Even these wars, etc., they are happening for that purpose. The old souls must go and new souls must come. That is also a plan. We don't know what that plan is, but there is definitely effect of these great souls on the humanity. Yes, sir. My compliments to Shinde साहब और दोनों जिन्होंने दूसरी भाषा का सबको मैं अभिनंदन करता हूँ. Thank you. तरल जी, हेलो तरल जी. नंदकुमार जी, श्रीराम जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ इसमें. हाँ, करिए प्लीज. तो एचपीपी का मैडम ब्लैवर्ट्स्की ने जो वॉइस ऑफ साइलेंस लिखा है, उसमें उसके प्रीफेस में ज्ञानेश्वरी का रेफरेंस दिया हुआ है. वो 2 मिनट में पढ़ लेता मैं. The work from which I here translate forms part of the same series as that of from which the stanzas of the book of Dhyan were taken, on which the secret doctrine is based, together with the great mystic work called Paramartha, which the legend of Nagarjuna tells us was believed to be great arhat by the Nagas or serpents. In truth, a name given to the ancient initiates. The Book of Golden Precepts claims the same origin, yet its maxims and ideas, however noble and original, are often found under different forms in Sanskrit words, such as Gyaneshwari, that superb mystic treatise in which Krishna describes to the Arjuna in glowing colors the condition of a fully illuminated yogi, and again in certain Upanishads. This is but natural, since most of, if not all, of the greatest arhat. तो ये मैडम ब्लैवर्ट्स्की ने ज्ञानेश्वरी का रेफरेंस भी दिया है उनके वॉइस ऑफ साइलेंस में. जी, बहुत बहुत धन्यवाद एडिशन के लिए. ओवर टू श्रीराम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज कहिए. रामकृष्ण हरी, सबको नमस्कार. मेरा नमस्कार. ऐसा बहुत पहली बार हम आ रहे हैं. हम तो तमिलनाडु से विश्वकर्मी संस्थान, और हमारा गुरु है श्री तुकाराम गणपति महाराज और श्री रघुनाथ दास महाराज इधर है. थोड़ा ये हमारा ये वारकरी संप्रदाय का प्रचार खूब किए हैं इधर, और ज्ञानेश्वरी अभी तमिल भाषा में इधर ग्रंथ पब्लिकेशन कर रहे हैं. ऑलरेडी वी हैव डन द एकनाथी भागवत इन तमिल, और अभी ज्ञानेश्वरी भी होने वाली है. और इसके पहले भक्ति योग 12th चैप्टर का तमिल और इंग्लिश ट्रांसलेशन दोनों किए हैं रघुनाथ महाराज ने. उसमें पसायदान का डिटेल्ड अर्थ भी दिए हैं. तो खूब आनंद हुआ आप सबको मिलने के लिए, और वही बात में परिचय आप जो कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है वो दुरितान चेति मरजाओ, जो the son Maharaj is asking that not the worst people should be killed, the worstness in them, the bad thoughts in them, that alone should be killed, but not the bad people. Means ये तो इससे ज्यादा यूनिवर्सल प्रेयर कोई दे सकते हैं. और एक और बात है, उस समकाल में संत नामदेव महाराज है, वो पंढरपुर में थे. वो लिखे हैं, नमामणे ग्रंथ श्रेष्ठ ज्ञान देवी एकतरी ओवी अनुभवावी. Even if you get one OV, even if you understand one OV from this whole Jnaneshwari, which we have already done, we have to learn 9 OVs today. This ekatari OV anubhavi, it will make you definitely the peacefulest person in the world. तो ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान सब ज्ञानी हो जाते हैं ऐसे ये तो वर है. और बहुत सारे प्रमाण देते हैं महाराज.
and Janabai sir. But just thought of giving prostrating to all you all, and also getting a thankfulness. Just we also part of from Vishwakarma Samsthan Tamil Nadu, thought of getting mingled with you all. That is the only point I wanted to convey. Thank you, Sri Ram. Sri Ram, I am at Adyar. You can come and meet us in the Adyar. And whatever you said, it is very correct. We must walk what we talk. So be the change that we wish to bring. But this is not happening in the humanity as a whole. We talk about saving lives, but develop and supply arms and armaments to the war. Even this is what it is happening. And at least one sentence we must leave it. So we talk about global unity, but divided enough and destroy each other without understanding properly. So we talk about peace, but spread hatred. So all these things are going on. That is what Duritanche Timirazao, and in that place, good thing must replace it. Very good. You have understood and explaining in Tamil. We are very happy to listen you. Thank you. Thank you, Shri Ram ji. Thank you, Chandrakant ji. मैं आपको श्री राम जी ये भी कहता हूँ कि प्लीज जब भी आपको समय लगे, त्रिवेणी का यही लिंक रहता है एवरी ट्यूसडे, आप आए. और we are very happy that if you can share something in Tamil also, we can have a common language as Tamil and English and Hindi. So Raghunath ji and Shri Ram ji, I welcome you. Gita ji, Ramakrishna Hari. See, I'm also from Chennai, and I just wanted to just share one thing. Like our Guruji Sri Raghunath Das Maharaj, who is also here, he is taking his class, Jnaneshwari class, every day, morning 5:30 to 6:30 regularly. And many students, you can see, like at least 50% of the Tamil population, they are now having Jnaneshwari Grandam at home. Wow. And they are participating in Jnaneshwari Pravachan. And Maharaj, our Raghu Maharaj, he is like a birthday celebrated in every house. Jnaneshwari Saptaham celebrated in every house in Tamil Nadu nowadays. Very often we see in every month Jnaneshwari Saptaham is conducted, and Maharaj is teaching us for the past say 12 years. For the past 12 years, he is teaching us Jnaneshwari, and we recite Pasayadaan every day after our classes over. And really, I felt like like Marathi is not something, a different language. It's our mother tongue. I felt in such a way, like because our Guru Maharaj, he has taught us Jnaneshwari and Abhangs in such a way that we don't feel that Marathi is a different language. We feel that Marathi and Tamil are same. We feel very homely and we enjoyed. Thank you. Thank you very much. Thank you, Gita ji. And please be there whenever you can on TS Triveni meet. Dinakaran ji, आप कुछ कहना चाहते हो? और सर आपका नाम नहीं मालूम, लेकिन शायद दिनकरन. नहीं, दिनकरन जी आप बोलिए. Namaste ji. I am very happy to be with you in this evening to listen a discourse on Jnaneshwari and Pasayadaan. As you know, we have got a translation Malayalam on Jnaneshwari long back. It gives a detailed account of this Pasayadaan, Prasada Danam in Malayalam we call it. And I also became interested in Jnaneshwari, as Brother NANDKUMAR ji pointed out. HPB has mentioned in her preface to the Voice of the Silence about the importance of occult treatise, Jnaneshwari, and Jnaneshwari is considered as a great initiate. So I knew personally that many people in Kerala are studying Jnaneshwari. The original Marathi we may not be able to follow, but we have got a good translation in Malayalam and also in English. I am very thankful to every one of you, especially the Triveni organizers. Just like Ganga, Yamuna, Saraswati, we have English, Malayalam, and English, Hindi, Marathi, and Gujarati. It's a very nice thing. It's a blessing to be deep at least once in
in a vibe in this Sangam of Triveni and be enlightened. Thank you. You are also going to be a part of this Sangam next week, because we will have Okay, Malayalam, okay, of course. Malayalam also added into it. Okay. Yeah, thank you. I will send you the English Yes, version of my talk sure, sir. tomorrow. Sure, sure. Thank you. Thank you. Anyone else, sir? Phone call came. Anyone else? Sir, आपका नाम नहीं मालूम, लेकिन QCOM BT3 is written on your phone. Do you want to share anything, sir? No, I don't think so. I want to thank Theosophical Society to give a great opportunity to participate in this Triveni. Thank you. Thank you very much. My namaskar. So due to some work, I am leaving. Namaskar, namaskar. He phoned me and I got permission from Taral. Raghunath ji Most phoned me. welcome, Raghunath ji. You are always welcome. Thank you very much. Thank you, sir. संजय पोटे जी, आप भी हैं तो कुछ कहना चाहेंगे? संजय पोटे नहीं है, उनका फोन है सर। हाँ, फोन है क्या? फोन है। ऐसा कि शायद ज्वाइन किया होगा। हाँ, I think शायद सही बात हो गई थी। He told me that he will be traveling. मेरे ख्याल से कुछ और कोई कुछ कहना चाहता हो, नहीं तो मैं फिर समापन की ओर बढ़ना चाहूँगा और मैं आज की सभा का समापन करना चाहता हूँ। काफी समय भी हो गया है, 8:40। सरल जी, बस मैं एक बात, सरल जी नमस्कार, बोलिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। एक बात मुझे जय कृष्ण मूर्ति जी की याद आ रही है, जो आज की सभा से मैंने जिसका निचोड़ पता चला कि कलेक्टिव इंटेलिजेंस इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल इंटेलिजेंस। नथिंग ग्रेट कैन बी अकम्प्लिश्ड इन लाइफ ऑल अलोन। तो आज जो आपने ये एक गुलदस्ता जो है हम लोगों को प्रस्तुत किया, वो सबके सम्मिलित प्रयास का फल है। मैं सबके प्रति कृतज्ञता से नमन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सुषमा जी, धन्यवाद आपके आशीर्वचन के लिए। और चंद्रकांत जी, अगर आप सबकी इजाजत हो तो क्या हम समापन की ओर बढ़े? पूजा तो हो ही गई है इतनी बढ़िया। Yeah, very nice. Thank you so much.